वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला। तो पिला माने हमर चलतिला एबे एमसीक्यू सीरीज तुमरो ने अपकमिंग एग्जाम पाई। तो एबे कोन करूची मु सेइथिरु तमे एबे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी तुमरो 25 मार्क आसुची। तो ट्रू फॉल्स माने को स्टेटमेंट आ ट्रू को स्टेटमेंट आ फॉल्स से क्वेश्चन भी तुमरो फिल इन द ब्लैंक्स भली भी आसी परिबो और ऑप्शन देके एमसीक्यू टाइप रो भी आसी परिबो। तो तमे को स्टेटमेंट आ ट्रू स्टेटमेंट को जदि मने रखिबो ताले तुमरो एमसीक्यू आसले भी करि परिबो फिल इन द ब्लैंक्स आसले भी करि परिबो। तो एमसीक्यू को क्वेश्चन मु पूर्व वीडियो रे करैछि एलपीपी रो एबे मु ट्रू फॉल्स आउ फिल इन द ब्लैंक्स करूछि। तमरे एमसीक्यू 25 मार्क आउ फिल इन द ब्लैंक्स 25 मार्क आसीबो। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन राइट ट्रू और फॉल्स if the feasible region for a linear programming problem is bounded then the objective function z equal to x plus by has both a maximum and minimum value on r। जदि बाउंडेड हबो ताले ऑब्जेक्टिव फंक्शन z टा बोथ मैक्सिमम आउ मिनिमम वैल्यू अकर करिवो। ट्रू ना फॉल्स? एटा हला ट्रू। if the feasible region for a linear programming problem is bounded region जदि हबो ताले ऑब्जेक्टिव फंक्शन टा बोथ मैक्सिमम भी अटेन करिवो और एंड मिनिमम भी अटेन करिवो। so this is true statement। so एटा को तमरो एमसीक्यू एक भी पढि परिबो और फिल इन द ब्लैंक्स एक भी पढि परिबो। डैश वैल्यू ऑन आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके or if the feasible region for a linear programming problem is dash then the objective function has both a maximum and minimum value on r। Then come to second question, the minimum value of the objective function z equal to x plus by in a linear programming problem always occurs at only one corner point of the feasible region। The minimum value of the objective function in linear programming problem always occurs at only one corner point of the feasible region, that is false। Then come to question number 3, if the feasible region for a linear programming problem is unbounded maximum or minimum of the objective function may or may not exist। unbounded हेले maximum or minimum value टा occur करि पारे exist हेई पारे और न हेई पारे, it is true। Then come to next question, maximum value of the objective function in a LPP always occurs at only one corner point of the feasible region, that is false। एटी कोन देथिला minimum value गोटे पॉइंट कॉर्नर पॉइंट feasible region रे occur हबो, that is false। maximum value भी only one corner point रे occur हबो, that is also false। in a LPP the maximum value of the objective function is always 0 if origin is one of the corner point of the feasible region। false। maximum value कोन सब बेले 0 हबो जदि origin टा one of the corner point हबो। जदि origin टा गोटे corner point हबो तार maximum value कोन 0 हबो always? no, that is wrong। in a LPP the maximum value of the objective function is always finite, that is true। so in the linear programming problem रे maximum value टा सब बेले finite value ओटे आसीबो। then come to fill in the blanks। in a LPP the linear function which has to be maximized or minimized is called a linear dash function, linear objective function, objective। in a LPP the linear function which has to be जोटा की maximum z और minimum z लिखा जाए ताऊ कौन कहा जाए linear objective function। okay so 7 question is answer is objective। then come to 8, the common region determined by all the linear constraint of a LPP is called the dash region, feasible region, common region determined by all constraint जो लाइन उडा का में बाहर करिबा तारो feasible region माने कर एटा हला ताऊ कोन कहा जाए, that is feasible region। the common region determined by all the linear constraint of a LPP is called the feasible region।
feasible region. That is question number 8 ro answer. Come to 9. In a LPP, the linear inequalities or restrictions on the variables are called linear constraints. जोड़ा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जोड़ा थिबो जो दउथबो इक्वेशन गुड़ाक x प्लस by प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 दैट से गुड़ाक हम सब कौन ना लिनियर कन्स्ट्रेंट्स. सो लाइन रो आंसर है लिनियर कन्स्ट्रेंट्स CONSTRAINTS constraints. So fill in the blanks भी तमरो 25 मार्क आसुची पिला माने ठीक अछि. तो इन ए 10th क्वेश्चन इन LPP the objective function is always linear. objective function टा always linear आसीबो ax plus b एम्प्टी फॉर्म रे आसीबो. linear means power maximum power 1. So 10th answer है linear. Then come to 11. If the feasible region for a LPP is dash, then the optimal value of the objective function may or may not exist. May or एबे आमे ट्रू और फॉल्स रे पढिथिले may or may not exist केते बेले हबो जदि feasible region टा unbounded हबो. So 11 रो आंसर हैला unbounded. If the feasible region for a LPP is unbounded, then the optimal value of the objective function may or may not exist. हैला. So come to 12th. In a LPP, if the objective function z equal to ax plus by जोटा कि एटा linear is always linear थिला आंसर has the same maximum value on two corner points of the feasible region, then every point on the line segment joining these two points give the same dash value, maximum value. In LPP, the objective function has the same maximum value on two corner point of the feasible region, then every point on the line segment joining these two points give the same maximum value. दीटा point रे दीटा corner point रे maximum same maximum value आसीबो. then every point on the line segment joining these two points give the same maximum value. अन्य point रे भी से same maximum value आसीबो. 13. A feasible region. So that it has maximum value. A feasible region of a system of linear inequalities is said to be dash if it can be enclosed within a circle. A feasible region of a system of linear inequalities is said to be bounded. It has bounded if it can be enclosed within a circle. Then come to 14. A corner point of a feasible region is point in the region which is the dash of two boundary lines. Intersection of corner point of a feasible region is a point. Corner point उडाको केमती बाहरे तो एटा गोटे लाइन जाइछि एठी गोटे लाइन जाइछि तो एटा हला हमरो कॉर्नर पॉइंट बाहरला. एटा केमिति आसुछि ना कॉर्नर पॉइंट ऑफ ए feasible region is point in the region which is the intersection of two boundary lines. So दीटा लाइन रो intersection रे ये कॉर्नर पॉइंट उडाको आसुछि. intersection 14 रो आंसर हला intersection of two boundary lines. Then come to 15. The feasible region for an LPP is always a convex polygon. The feasible region for an LPP is always a convex polygon. Okay, so these are the fill in the blanks question. किछि true false अछि ताकू MCQs भी पढ़ी परिबो fill in the blanks एक भी पढ़ी परिबो. Okay, so these are all about LPP MCQs. Then come to आमे आसीबा next determinant by vector एमती next को MCQs नै के आसीबी आउ selective 3 mark 5 mark question नै के आसीबे. यदि वीडियो टी भल लागिथिबो लाइक कर दबो निज फ्रेंड मानन सहित शेयर कर दबो जूनियर मानन सहित भी शेयर कर दबो जो माने 11th ରୁ 12th को आसीबे. नेक्स्ट 12 रो पूरा लाइव सेशन स्टार्ट करी नेक्स्ट एप्रिल रू स्टार्ट करी एप्रिल मिडिल बा एप्रिल लास्ट वीक रू लाइव सेशन 12th रो स्टार्ट हबो. तो जो पिला माने लाइव सेशन रे पढ़िया को चाहिए से माने देखि परिबे. ठीक अछि तेनु जूनियर मानन सहित शेयर कर दबो लिंक को.
चैनल रो लिंक को ओके।